All right, visuals there on your screen. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has now reached Prayagraj. Those are the details at this point in time. He has visited there to pay a tribute to Mahant Narendra Giri. Those are the visuals coming in on your screens. He's visited the Baghambari Math as well. Let's listen in. आम जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। हालांकि 12 बजे जो सपा के मुखिया अखिलेश यादव हैं उनका भी प्रोटोकॉल है, वो भी 12 बजे यहां पर अंतिम दर्शन के लिए देखने आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कम से कम 15 से 20 मिनट का समय जो अभी अंदाजा लगाया जा रहा है उसके मुताबिक अंदर बिताएंगे और अंदर बिताने के बाद फिर वो बाहर आएंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे। उनके साथ तमाम जो जिले के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय नेता हैं, चाहे हम वो मेयर की बात करें, स्थानीय विधायकों की बात करें और दूसरे नेताओं की बात करें, वो सभी अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो संत समाज के लोग हैं, अलग अलग अखाड़ों से आए हुए अंतिम दर्शन करने के लिए लोग हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। कई संत समाज, कई बड़े संत जो अंदर हैं, फिलहाल उस कमरे में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। सिर्फ संत समाज के लोग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इससे पहले जो दर्शन करके गए हैं केशव मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, इन तमाम जो वीआईपी हैं उन्हीं को इजाजत थी कि वो अंदर जाएं और वही लोग अंदर गए हैं। फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देखें तो गेट को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी प्रयागराज के दौरे पर आते थे तब वो स्वामी नरेंद्र गिरी से मिलते थे। चूंकि मुख्यमंत्री जी खुद एक संत हैं, ऐसे में संत समाज से बड़ा लगाव रहता है और इसी को लेकर जब भी वो आते थे यहाँ पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते, संत होने के नाते उनसे मुलाकात किया करते थे और एक आत्मीय लगाव भी था। जो हमें सूत्र बताते हैं, जो हमारे लोग बताते हैं, जो मुख्यमंत्री और नरेंद्र गिरी को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, वो ये कह रहे हैं कि देखिए इन दोनों के बीच में बेहद लगाव था। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत हैं और जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। ऐसे में एक तरीके से अगर आप देखें तो पद प्रतिष्ठा के लिहाज से जो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष होता है वो संतों में सबसे बड़ा होता है और उसी के लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर तस्वीरें आपको देखेंगी कि किस किस कदर यहाँ पर जो तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो कोई जो लगाव था, जो जिस तरीके का आत्मीय संबंध था वो देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने स्थानीय नेताओं का जिक्र किया, चाहे मैं केशव मौर्य की बात करूं या फिर दूसरे नेताओं की बात करूं, वो सभी यहां पर आए हैं और जब भी यहां पर कोई भी नेता किसी भी दल का आता था तो वो सबसे पहले दर्शन करने के बाद अगर संतों में किसी से मिलता था तो नरेंद्र गिरी से मिलता था। अपने आप में बड़ी शख्सियत थे, ना सिर्फ अमित शाह की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तमाम ऐसे लोग जब भी कभी प्रयागराज आते थे और दर्शन करते थे लेटे हनुमान जी मंदिर के, उस दौरान नरेंद्र गिरी यहाँ पर मौजूद रहते थे। उनके साथ में ये सभी वो लोग हैं जो बेहद दुखी हैं और इन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इस बात का जिक्र भी किया है। फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमरे के अंदर मौजूद हैं और उसके ठीक बाहर पोडियम बनाया गया है जहां पर जो उनके देखने के बाद, अंतिम दर्शन करने के बाद जो उनका अभिभाषण होगा वो किया जाएगा और तमाम जो मीडिया से रूबरू होने की कोशिश करेंगे उनको भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो संत समाज के लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। अलग अलग अखाड़ों से 13 अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग अखाड़ों के साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर बड़ी संख्या में जो उनके अनुयायी हैं वो खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। चूंकि 11:30 बजे का समय दिया गया है अंतिम दर्शन के लिए, ऐसे में माना जा रहा है कि अंतिम दर्शन के लिए जब रखा जाएगा पार्थिव शरीर को स्वामी नरेंद्र गिरी के, उस दौरान बड़ी संख्या में जो स्थानीय भीड़ है, जो उनके अनुयायी हैं, वो भी आ सकते हैं। All right, that of course are visuals coming in from the Baghambari Math in Prayagraj, where Yogi Adityanath, Uttar Pradesh Chief Minister, is visiting at the moment. This obviously is in after there's going to be the Antim Sanskar, which is going to happen at 11:30. Remember, this is entire mystery surrounding this UPC's death. The FIR has been registered. A disciple and priest have been arrested as well for abetment to suicide. Let me also go across to Alok, who's joining us for more details at this point in time. Alok, what can you tell us in terms of the latest developments here? Of course, the final rites will be in a short while from now. Yes, absolutely. In fact, what we are learning that police will definitely conduct the post-mortem examination as well.
because this is one of the important evidences that will ascertain whether he died of any mysterious circumstances or not, whether he consumed anything or not before his death, and what is the exact time of his death. That will also be ascertained in the post-mortem examination. So this will be conducted definitely. Right now, the homage, the activity of paying the homage is already going on in Allahabad, in basically Prayagraj, and where all the VVIPs and VIPs are coming. Yogi Adityanath has already arrived. So this will keep happening. But right now, the police is focusing on the investigation. They have already arrested two of the main accused, because why we are saying that the accused, because they are named in the suicide note, that is purported suicide note that is recovered from the room of Narendra Giri. Yesterday evening, his body was found hanging, and his disciples, in fact, broke open the door. Alok, my and they went apologies. inside Please and do they, stay with us. I'll come back to you on the investigation details, but let's cut back across to Prayagraj at this point in time. जांचने की पड़ताल करने की जरूरत पड़े और इसीलिए उसे पूरी तरीके से सील करके रखा गया था। सिर्फ जो बहुत खास लोग हैं, जो अखाड़े से मठ से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें ही सिर्फ वहां पर उस प्रिकॉशन के साथ भेजा गया था। अंदर जाने की इजाजत दी गई थी कि अगर वो जाते हैं तो किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ स्वामी नरेंद्र गिरी के शव को देखेंगे, उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और इसीलिए जो भी वीआईपी मूवमेंट होता था उसको लेकर बाकायदा जो स्थानीय पुलिस है वो तैनात थी। फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देखें तो जो बड़े अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। तमाम जो ब्रीफिंग, जैसा कि आपने सवाल पूछा था कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री के कई संभावित सवाल हों, चूंकि बड़े महंत हैं, संत हैं, तो ऐसे में स्थानीय स्तर पर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है उसको लेकर भी पूछताछ कर सकते हैं कि आखिर क्या कुछ इंटेलिजेंस इनपुट भी था, क्या ये इतने बड़े महंत थे, इतने बड़े नेता थे, माफ कीजिएगा, इतने बड़े महंत थे, इतने बड़े पद की प्रतिष्ठा पर बैठे हुए थे, तो क्या उनको लेकर कोई इंटेलिजेंस इनपुट था या नहीं था, क्या कोई और बात थी या उससे जुड़ा हुआ कोई और व्यक्ति सामने आ रहा है। चूंकि एफआईआर में एक व्यक्ति का आनंद गिरी का नाम शामिल किया गया है, 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, पहलू हैं, सवाल हो सकते हैं मुख्यमंत्री के, जिसके संभावित जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस फिलहाल कर रही होगी। अभी आप तस्वीरों में देखें तो जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा के जवान हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है कि बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से भी मुखातिब होंगे। Have resulted into this unfortunate incident, and how does he see the investigations progress from here on? But yes, this is the word from the Chief Minister's office itself, that initially they will rely on the police, on the local police to come up with evidences and perhaps their initial conclusion about what might have caused Mahant Narendra Giri's death, and it is only after that that they'll decide whether a special investigation team has to be put in place for investigation, or perhaps the matter be referred to the CBI. But so far, no inkling of the state government handing over the case to the CBI, as has been demanded from various quarters, including some of the very known sons and seers from Prayagraj and Ayodhya, and also from certain opposition parties. As far as the Aam Aadmi Party is concerned, we heard the Rajya Sabha MP from Aam Aadmi Party, Sanjay Singh, clearly saying that there is foul play into Mahant Narendra Giri's death, and he's also demanded the CBI inquiry. But all of that is not being looked into right now by the Chief Minister's office or by the UP government. They are relying on the local police's investigation as far as this matter is concerned. All right, let's in fact go back to Alok, who is still with us. Alok, so obviously on one hand, all of this is happening in Prayagraj at this point in time. But let's talk a little bit about the entire sequence of events, what happened and how it happened. If you can just take us through all of those details. Yes, so Akhil Bharati Akhara Parishad's president Narendra Giri, he found dead yesterday, and in the evening around 5:20 p.m. the police call was made, and when the police reached, they found the body was already at the bed.
means that his disciples had already taken down the body. Remember, at around 12 p.m. it is usual schedule that he usually go for food, go for rest after food, and then he take rest around 3 p.m. He usually he would usually take tea, but yesterday he did not turn up for the tea, and around 5 p.m. when his disciple went to his room, he did not open, and then later after that they broke open the door and they found the body hanging. This is what the police FIR is saying. Now, there are several things that need to be investigated properly, because this is a high-profile matter, and usually we see that police always set up some SIT and do proper investigation. That is what everybody is talking about. In this case, if you see, there are four things. That one is that there is a suicide note, which is around 17-page suicide note, where the names of 3 persons are mentioned. Their fudging of that money, that is also been written. How Narendra Giri was under depression, that is also been mentioned. So he has written the story, but this is in the position, this suicide note is in the position of the Uttar Pradesh police, and they are now going to match it with his handwriting. This is very important, that if his handwriting is being matched, then definitely it is a case of suicide. And as of now, primary investigation also ascertaining the same thing, and that is why the police has registered this case under section 306, and they have already arrested 2 of the named accused. But in this case also, one thing is very important, that post-mortem examination report, because Avni, we haven't seen in the past, in fact in these mysterious deaths, we haven't seen that police is immediately registering the case and arresting the persons. Usually police conducts the post-mortem examination, and then if the report tells or suggests any kind of mysterious things, then they go accordingly. But in this case, might be there was a huge pressure on the police, so that is why, and they have also got the suicide note naming 3 persons. So police investigation need to be done properly. Police is going one by one, but we have to wait that what will happen next. But right now, police is saying that 2 persons have been arrested. One who is Sandeep Tiwari, he is yet to be arrested. Back to you.